A case was registered against 8 people in Uttar Pradesh Prayagraj after a video showed man smoking hookah and cooking chicken on a boat on the Ganga. On Wednesday, the Prayagraj police, in a Twitter post, said it had booked 2 identified and 6 unidentified individuals in the case and will soon arrest all of them. एक वीडियो हमारे संज्ञान में भी आया जिसमें एक नाव पे द्वारा हुक्का टाइप की चीज़ का सेवन किया जा रहा है। साथ ही साथ वीडियो में इसमें प्रतीत हो रहा है कि नॉनवेज रखा हुआ है। इस वीडियो की जांच कराई जा रही है, आइडेंटिफाई कराया जा रहा है कि ये व्यक्ति कौन है, इसको आइडेंटिफाई करा के इसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई जो है संगत धाराओं में विधिक कार्रवाई सुनिश्चित। The accused have been charged with hurting religious sentiments and defiling a place of worship. A video shared shows a man in a white shirt puffing a hookah on a boat in a 30-second video that has gained traction on social media. The camera pans out to show kebabs being roasted as the boat floats on the Ganga in Prayagraj. The Uttar Pradesh police formed a team and launched a hunt for the alleged offenders. The video is thought to be from the Nagvasuki Mandir from Daraganj in Prayagraj, an important pilgrimage center for Hindus.